So, welcome all of you once again to our grammar lectures. And though it is what I would call it revision, but it's not going to go in a short form. It will be once again in detail, but this time in a different format. Initially, we had done in a writing form on papers, and so it would be of no use if we repeat the same format and all. This time we are going to carry out and move ahead with the grammar lectures. Once again, very much in detail, but on this by your screen sharing on the smart board. So let's start with the basics of grammar. Many students who are not well versed with the basics, I would say, see the parts of speech के हर एक जितने मैंने पहले भी वीडियोस बनाए थे और आप तक पहुंचाए हमने जैसे parts of speech, compound, complex, simple, active voice, passive voice, direct, indirect, figure of speech, lot many things, affirmative, negative, that whole lot of grammar which contain for more than 25-26 hours of the grammar teaching. And I would wish to give you the same hours this time also, but let's see how much how much the time permits us or what the condition is related to your school final exams and all, as we have yet to complete some of our SS chapters too. So, but before that, I would say pay attention, have a look at both the videos. अगर पास ऑफ स्पीड जैसे आज स्टार्ट कर रही हूँ तो गो थ्रू दिस वीडियो ऑल्सो और जो पहले हमने भेजे थे जो तुम्हारे ऑलरेडी फोल्डर्स में है अलग अलग ऐसे इंग्लिश ग्रामर के फोल्डर में चेकआउट कर लेना तो सारे जो ऑर्डर वाइज मैंने रखे हुए हैं go through parts of speech. Now, when I would start with active passive, you can see that video also and go through these current videos also. It will be of great help to you, right? So let's start parts of speech. Now, parts of speech you must be now already knowing. अगर पहले वाले वीडियो ध्यान से तुमने देखे हैं और रिवाइज किए हैं तो पता ही होगा that noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, interjection. These are all called parts of speech and they have their own role and function to play. And they play this particular role within the structure of the language. So let's see how do they play their role. Now, अब तुम कहोगे ये सबको पता है what is noun and pronoun, but yes, there is still even today difficulty among many students at I would say 9th 10th level. 8th is okay, but 9th 10th level पे भी बच्चों में कई बार when I ask them just name out some pronoun तो वो कहेंगे is was are were. तो ये छोटी मोटी गलतियां छोटी मोटी नहीं कह सकते हम अगर तुम इंग्लिश मीडियम में हो तो आई वुड से इट्स अ वेरी big thing not to know what is noun pronoun etc. तो अगर इंग्लिश मीडियम में पक्का अपने आप को पूछ लें इंग्लिश मीडियम में हो you need to know the grammar very much perfectly. And so here I am to provide you once again with lots of examples. So pay attention, keep on revising और एक book और pen साथ में रखा करो for the grammar lectures. And whenever you revise also of course, और जो भी कोई doubt आते हैं, you can just jot it down in your diary and then you can ask me in our next lecture when we meet, right? So now, noun refers to simple people, place, animal, thing, ideas, concepts, etc. Like my thought. अब मैंने कहा था that the moment I use the word my, ठीक है? तो this my dash. तो अगर thought है तो यहाँ पे लिख के रखो my thought, my ideas, my house, my country, my nation, my state. तो जैसे my के साथ जो word यहाँ पे set हो चुका है this becomes your noun, right? Getting it? Like Michael is a good boy. तो ये लड़के का नाम हुआ. It's a noun. It's a proper noun of course.
Melbourne is the best city. Again, proper noun, city, common noun. Right? Next, pronoun. अब हर बार अगर मुझे सपोज कि मेलबर्न के ऊपर कोई कॉम्पो लिखना है तो एवरी टाइम आई एम नॉट गोइंग टू राइट मेलबर्न 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 या माइकल 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 एज अ गुड बॉय. माइकल की जगह पे नेक्स्ट टाइम आई यूज ही हिज हिम अकॉर्डिंगली. मेलबर्न की जगह पे इट इटसेल्फ एटसेट्रा. राइट? तो ये जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं ही शी इट आई यू वी दे, ये सारे हुए pronoun. So please remember that I, you, we, they, and then there's a slash in between, and then there is he, she, it, right? So I, you, we, they. Another category, he, she, it. A pronoun is used to refer to a noun or a noun phrase or noun phrases instead of the repeated use of the same noun or noun phrase. For example, Michael is a good boy. Michael gets up early in the morning. Then Michael goes to school. Then Michael comes back home. Michael listens to all the lectures so very carefully in the school. Then Michael goes to tuition. There also Michael works very hard. Abhi Michael, it's like a hammer on the head. Let's start using pronoun. क्योंकि अगर माइकल पे पूरा पैरा उसके बारे में लिखना है तो व्हाई नॉट यूज, आई वुड से he, him, himself, his, etc. according to the sentence that we are framing. तो I, you, we, they को मैंने अलग बना दिया. He, she, it को अलग रखा है. अब ये याद होगा, हमने जब पहली बार ग्रामर किया तब मैंने बताया था. So let me repeat it again. Why two different groups over here? I, you, we, they. Naturally, just take any helping verb. Let's take a helping verb. Say any. Let's take have. Right? Now, I have, you have, we have, they have. But he, she, it के साथ ये have नहीं जाएगा. तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? He has, she has, it has, right? So I, you, we, they have, he, she, it has. अब I, you, we, they के साथ he, she, has नहीं होगा. So I, you, we, they के साथ has नहीं, he, she, it के साथ have नहीं, but I, you, we, they के साथ have, he, she, it के साथ has. This is very important. You will have to understand. Like I do, you do, we do, they do. He does, she does, it does. So this is how, this is the main reason why I have framed two different groups of pronoun, right? And pronoun means it is used in place of a noun or noun phrase or noun phrases. Clear? Let's move ahead. Verb. अब वर्ब दो टाइप के होंगे, वो आगे हम देखेंगे, द टाइप्स एंड इज डेफिनेशन ऑल इन डिटेल. बट as you see over here that verb के लिए हम लगाएंगे to. जैसे noun के लिए हमने my लगाया था, यहाँ पे to. For example, let's see. Verb shows an action or an ongoing condition. तो एक सिंपल वर्ड में हम बोल सकते हैं verb मतलब action. फिर दो टाइप के verb होंगे, like helping verb and actually the complete action, right? Complete verb. And it is considered as the heart of a sentence. अगर तुम कहोगे Alex is, let's just say he home.
ही होम, एलेक्स होम, तो ये समझ में नहीं आएगा। तो ये इज गोइंग, लव्स, ईट्स, सिट्स, डांस, स्टडीज, वॉक्स, ये सारे हुए एक्शन, वर्ब, and it is said to be the heart of a sentence. Without it, the sentence is incomplete. तो टू के साथ कोई भी वर्ड जैसे हम लगाते हैं, चलो टू थॉट, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इट इज माई थॉट। टू आइडिया, नो, माई आइडिया, तो माई के साथ जो लगता है उसे हम कहते हैं नाउन। टू के साथ जो सेट हो रहा है उसको हम कहेंगे वर्ब। टू लव, or to eat, to go, to dance, to sit, to cook, to bake, to jump, etc. To smile, to study, of course. So we can take that. थोड़ा तकलीफ वाला शब्द है study, but we'll have to take it. To study is an action, right? Next, adverb. Something when you add or you modify or you describe the verb, it is called adverb. अगर तुम किसी के एक्शन को तुम डिस्क्राइब करो, देखो नाउन को डिस्क्राइब करना एडजेक्टिव, बट किसी के काम या एडवर्ब या एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करना इज कॉल्ड, और यू कैन टेक इन वेरी सिंपल वर्ड, इफ यू आर कंफ्यूज जस्ट टेक वर्ब एडवर्ब। चलो ये भी कट कर दो, ये भी कट कर दो, टेक ओनली वर्ब। किसी भी वर्ब को डिस्क्राइब करना, वर्ब को डिस्क्राइब करना हम कहेंगे एड वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, शी इज सिंगिंग, हाउ इज शी सिंगिंग? स्वीटली, लाउडली, कोर्सली। शी इज स्टडिंग, हाउ? attentively, like with concentration, dedicatedly। तो इसे हम कहेंगे adverb। when you describe or modify, just remember at present, when you describe any verb, it is called adverb. It answers the question like how, when, where, how much. Like he is running, how fast? She always reads, how? Attentively। When does she read attentively? Always। तो ये हुए adverb clause of time, adverb clause of place, adverb clause of manner, adverb clause of like we don't use how much usually, but फिर भी ये quantity के बारे में बता रहा है, right? So this is what we are going to do much in detail when we carry on with our complex sentences, where we will see the clauses, subordinate clause like adverb clause of time, place, manner, reason, result, concession, contrast, lot many, right? That is concession, contrast, you can take as one. अब एडजेक्टिव, तो जैसे एडवर्ब मतलब किसी वर्ब या एक्शन को डिस्क्राइब करना, और एडवर्ब हमेशा जवाब देगा टू वेरियस क्वेश्चंस आस्क्ड लाइक व्हेन, वेयर, हाउ मच, एटसेट्रा। वैसे एडजेक्टिव इज व्हाट? एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज नाउन, राइट? इट डिस्क्राइब्स अ नाउन। फॉर एग्जाम्पल, और यहां पे हम लगाएंगे टू बी। तो एक था my was for noun, to was for verb, my thought, my idea, my nation or my country, my state, my house, my mother, my father, my friends, my homework, my studies. Moment you come to two, so you will not say two studies. To study, to come, to go, to dance, to sing, to bake, to stand, to sit, to study. To be beautiful, to be hardworking, to be caring, to be studious, to be confident. You are describing someone, right? Alex loves his beautiful daughters. His daughters also love their caring father. So you ask a question, which father? Caring father. Which daughters? Beautiful daughters. तो which को जो जवाब दे, which question का जो जवाब दे, उसे हम कहेंगे adjective. And
when, where, how much से जो जवाब दे, इस क्वेश्चन का जो जवाब दे, वो बन जाता है एडवर्ब. तो टू लगाने पे वर्ब बनेगा. To be is adjective, to be beautiful, to be caring, to be confident, to be studious, to study, to come, to dance, to sing, to stand, to bake, to eat, to cook, etc. And to study, of course. And my studies, IES, my thought, my idea, my concentration, my platform, my stool, my house, my mom, my dad, my siblings, and my school, and my teachers, and my friends, and etc. etc. ये बन गए नाउन. So once again, adverb to describe verb, adjective to describe noun, preposition. Preposition तो इसे हम कुछ इस तरह से समझेंगे. अगर याद हो तो हमने किया था प्री की पोजीशन कहां पे है सेंटेंस में, राइट? प्री की पोजीशन कहां पे? फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू फ्रांस. तो प्री कौन है? आई. दैट इज माई पोजीशन. आई एम गोइंग टू फ्रांस. फ्रांस इज इन यूरोप. प्री की पोजीशन कहां पे है? इन यूरोप. तो टू, इन, अबव, अंडर, बिलो, बिटवीन, these are all termed as preposition, preposition. It gives or tells us something related to noun in relation to other noun or pronoun. So it gives context to nouns in relationship to other nouns or pronoun. France एक noun, उसका दूसरे noun के साथ the relationship, उसकी position. I, pronoun with France, right? Next, conjunction. A conjunction connects nouns, noun phrases, clauses or sentences together. तो दो चीजों को ज्वाइन करना. Like, Julie loves chocolates and Julie loves chips. She loves pasta but she hates pizzas. तो here I would say and conjunction बनेगा, but आई वुड से यहाँ पे और एक सेंटेंस हम जब लगाएंगे तो बन जाएगा कंपाउंड सेंटेंस. तो मैं एंड बट फैन बॉयज को हम बनाएंगे कंजंक्शन, एंड इट इज ऑलवेज यूज्ड ओनली एंड ओनली इन कंपाउंड सेंटेंस. लाइक, अब देखते हैं फैन बॉयज. ऑफ कोर्स, लेट्स सी. तो right, fan, fan boys. Once again, when we'll be doing a conjunction, and in detail I'll be providing you these examples. When we'll be doing, yes, of course, a conjunction and connected compound sentences. But at present, at least you must be knowing. So let's do it in short. कई बच्चों ने शायद पहले के वीडियोस भी नहीं देखे होंगे, अब तक ध्यान नहीं दिया होगा या फिर या रिवाइज नहीं किया होगा. तो this is one extra. This is a bonus provided to you. Enjoy it, of course. And as I'm enjoying grammar a lot, I hope that you too on the other side must be enjoying it. So let's move ahead. F is for my favorite part of the grammar, conjunction. Fanboys, for. For is used for. अगर मैं क्लास में होती तो मेरे 8th 9th के बच्चे चिल्ला के बोलते, man is used for reason, right? अब 8th के बच्चे जो 9th में आते हैं, एट प्रेजेंट जो 8th में है वो नहीं, जो 8th के बच्चे 9th में आते हैं उनको ये बाहर हो चुका है. जो 9th के और 8th 9th से जब 10th में आगे बढ़ते हैं तो उनको तो फिर ग्रामर सुनने की जरूरत बहुत कम होती है. दे जस्ट रिवाइज इट वंस एंड इज देयर इन देयर हेड बिकॉज इट्स ऑलरेडी विद देम सिंस 2 years. तो F इज फॉर. अब जो नए बच्चे उनके लिए सेकेंड टाइम है, राइट? तो do it very perfectly so that next year becomes much easy for you. I would say easier for you. So for is used for reason.
I was late to school for I missed my bus. I didn't give my test for I had been to Udaipur for a tour. I didn't do my homework, or I didn't provide my assignment on time, for I had exams in school. I didn't give the unit test for I had school test. देखो ना कितने सारे रीजंस अभी मैं बाहर करवा रही हूँ तुम लोगों को, क्योंकि मैंने तुम्ही से बाहर किए। तो कई बच्चों को बाहर नहीं है, वो अभी से रीजन बाहर कर लो दैट what reason you can give for not giving test or for being absent, right? So that is for। ये जब हम रीजन देते हैं तो हम यूज करते हैं for, तो बन जाता है कंपाउंड सेंटेंस, राइट? एंड इज फॉर, देखो अभी चिल्ला रहे होंगे अगर हम क्लास में होते, मैम पैरेलल, तो A is for and is used for two parallel sentence, right? Now, I went to school and I studied. I worked hard and I scored good marks. Parallel है। I ran fast and I boarded the bus. Parallel, तुम क्यों दौड़े बस पकड़ने? बस पकड़ ली। तो कोई इसमें ऑपोजिट नहीं जा रहा, स्ट्रेट पैरेलल। जिस काम की वजह से तुम दौड़े थे वो फुलफिल, हार्डवर्क किया था गुड मार्क्स के लिए, मिल गए गुड मार्क्स। तो एंड N is for nor, which we usually make use in negative sentence, right? Negative sentence like, but you will use neither over here. Neither I love chocolates nor ice creams, right? तो ज्यादातर मतलब कम यूज होता है इसका। Now we come to but, B-U-T, but. A but is used for, yes, my children, I know you are shouting on the other side, is, but is for contrast. I worked hard but I failed. हार्ड वर्क क्यों किया था? नेचुरली अच्छे मार्क्स के लिए, पास होने के लिए, बट यू डिड, बट देखो लेकिन, बट आई डिडंट पास और बट आई फेल। तो कॉन्ट्रास्ट के लिए आई रैन फास्ट बट आई मिस द बस, कॉन्ट्रास्ट के लिए बट कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स हैं ये। ओ इज फॉर और, अब और भी सबको पता है, इट्स मम्मी, राइट? वर्क हार्ड और फेल, तो ये हुआ कंडीशन। ये जो कंडीशन घर में बड़े रखते हैं हमारे सामने, दैट इज कॉल्ड और। वी मेक यूज ऑफ और फॉर पुटिंग इन द कंडीशन वर्क हार्ड or fail. Do your homework quickly, or you're not coming with us to see the movie, or to the marriage, or to some party, or to Udaipur, or to Abu. You know, lot many conditions are kept. Why is for yet once again is same as but. It's contrast. And S is for so, and so is exactly the opposite of for, right? Like, let's see one example. Let's take one example over here. I was absent for, that is reason you are giving for, I was ill। अब देखो ये हुआ रीजन, एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट हम सो कर रहे हैं, तो ये पार्ट आगे लिख लो, राइट? यो इट विल कम ओवर यो, एंड दिस पार्ट यू कैन राइट इट ओवर यो, तब जाके बीच में आएगा सो। आई वॉज इल सो आई वॉज एब्सेंट, राइट? तो फॉर इज फॉर रीजन
And this is the effect. I was ill. तुम बीमार थे, उसकी इफेक्ट क्या हुई? That you were absent. तो ये हुआ effect, right? Now, so conjunction is connecting words, noun, phrases, clauses, sentences, etc. Now, interjection, oh, alas, it's like a surprise, or you are just expressing your emotions with somewhere happiness, hurrah, wow, yeah, surprise, या कभी दुख बताते हो, sorrow, that is alas, regret, oh, if only I would have done hard work, तो मैं शायद पास हो जाता या हो जाती. So regret, that is. So, oh, that feels terrible. Alas, they have lost the match. Right? So it is interjection. It is exclamatory mark that we put exclamation. Now let's see different types of noun and its definition. So full of enjoyment, let's start. So now we move ahead towards the definition types of noun. Noun we already have done. It refers to person, animal, place, things, ideas, events, etc. And nouns also encompass most of the words of a language. Means it covers. Encompass means covers. Now, noun can be a या an, like it could be a person, animal, thing, idea. Name of a person, तो common noun, proper noun, अलग-अलग होंगे. तो name of a person, then it could be name of for an animal, or it could be a thing, it could be an idea, like your idea, like devotion, happiness, abstract noun, you can call it. Superstition, devotion, lot many other things. So different types of noun over here. Proper noun like English, Hindi, Marathi, India, England. These are all proper noun. Common noun, state, country, girl, boy, laptop, phone, house, different things. Abstract noun, happiness, anger, cruelty, which you can't see, you can't touch, you can only feel. That is abstract noun. Your thoughts, your ideas, your devotion, your happiness, your concentration, etc. Concrete noun, right? We'll see ahead. Examples: countable, non-countable, collective, and compound noun. Let's see the first one as I did. Proper noun, it refers to only that one particular place, thing, or person that is single, which is not common, right? Like Melbourne, Australia, etc. Steve, Michael, common noun. It's used like common could be any. You can't say Mumbai is a common noun, but city is a common noun. Country is a common noun, but India is not a common noun, right? Then so some are proper, some are common. Then abstract, as I told you, your happiness, your sorrow, friendship, time, humor, patriotism, truth, honesty, lies, etc. It has no physical existence. You can't touch it. You can just feel it. Concrete, which you can touch, you can see, you can feel. Like you can touch a chair, table, bat, ball, water, money, sugar, etc. This is exactly, concrete is exactly opposite of abstract. Countable, that you can count. Sugar, you can't say that today I had 1 sugar, 2 sugar, right? Water, 1 water, 2 water. That is how much, how many becomes countable. 1 chair, 2 chair, 3 chairs, 4 chairs, etc. Non-countable, water, sugar, oil, salt, etc. Right? And collective noun, of course, let's see. Okay, here one more. Abstract nouns like your ideas, thoughts, sorrow, happiness, and proper noun are always non-countable. Remember it. Jaise, your devotion. You can't say today I had 1 devotion, 2 devotion, 1 happiness, 2 happiness. Proper noun, all these are non-countable. But common noun and concrete noun are both count and non-countable. So common noun like girl, boy, bat, ball. Concrete also bat, ball, house, etc. It could be countable also. Sometimes it could be non-countable also. Like sugar.
It is concrete. You can touch, but you can't count. But ball, concrete, but you can count. So some are non-countable concrete noun, some are countable concrete noun. And common noun, which is again countable also, non-countable also. But abstract and proper noun are 100% always non-countable. You can't count. Collective, like family, team, jury, cattle, etc. Right? It's a word. A collective noun is a word for a group of things, people, or animals, etc. Collective nouns can be both plural and singular. However, Americans prefer to use collective nouns as singular, but both of the uses are correct in other parts of the world. So collective nouns can be both plural and singular. Now compound noun, the last one of it. Sometimes 2 or 3 nouns appear together, or even with other parts of speech, and create idiomatic compound noun. Like compound noun मतलब 2 noun साथ में है with a hyphen in between. Like idiomatic means that those nouns behave as a unit and to a lesser or greater degree amount to more than the sum of their parts. So it's just very simple. 6-pack, right? 5-year-old, son-in-law, snowball, mailbox. तो हर बार जरूरी नहीं है कि हाइफन हो वहां पे, बस स्नो एंड बॉल, मेल एंड बॉक्स, एंड सन एंड लॉ, 5 एंड ईयर, 6 एंड पैक. तो ये कंपाउंड नाउन हुए, राइट? अब देखते हैं प्रोनाउन डेफिनेशन टाइप्स. तो हमने किया पहले नाउन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन एंड डेफिनेशन ऑफ नाउन. अब प्रोनाउन, उसकी डेफिनेशन एंड टाइप्स. A pronoun is used in place of a particular or specific noun mentioned earlier in the sentence, so that you don't have to repeat that noun on and on and on and on. Like Michael, 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 right? Just use it once, Michael, and then say he, his, him, etc. So let's see. For example, the coach selected several key points. फिर coach, 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 coach बोलने की जरूरत नहीं है. Just use he. और keys की key points की जगह पे they, them. So he wanted the team to memorize them, that is to remember it, by heart it. So he replaces the coach, them replaces several key points. The word or phrase that a pronoun replaces is called antecedent of the pronoun. In the previous example, original noun coach is antecedent, right? And the pronoun he is referent because it refers back to the original noun. मतलब कोच यहाँ पे हमने सबसे पहले ले लिया, तो उसकी जगह पे हमने ही यूज किया, तो कोच क्या हुआ? एंटीसीडेंट, राइट? और जो प्रोनाउन उसको, मतलब प्रोनाउन इसे रिप्लेस कर रहा है कोच को, राइट? सो द वर्ड और फ्रेज दैट अ प्रोनाउन रिप्लेसेस इज कॉल्ड एंटीसीडेंट ऑफ द प्रोनाउन. और तो कोच हुआ एंटीसीडेंट, और प्रोनाउन ही उसकी जगह पे हम यूज करें तो उसको हम कहेंगे रिफरेंट, राइट? Antecedent and the pronoun that is referent must agree in terms of number and gender. Now let's say subject pronoun, object pronoun. You need not go much detail in all this. It's okay, but you should know this part, that what is a pronoun. Simple, right? बाकी ये तो बहुत ही lower standard में भी आ चुका है. But at present, it's not. You are not going to make use of individually these types of pronoun. लेकिन जानना जरूरी है आगे जाके, शायद तुम इंग्लिश टीचर बन जाओ तो you should know about this very much minute details, very much in detail about all these parts of speech and figure of speech and lot many. It's a huge grammar, like we say. Maths की कोई लिमिट नहीं है, it is on and on and on and on. वैसे maths equal to grammar, grammar equal to maths. So let's move ahead. Subject, pronoun, object, possessive, reflexive, intensive, relative, demonstrative, interrogative. देखते हैं subject pronoun. That is, subject pronoun works as a subject of the verb in a sentence. मतलब कि जो pronoun verb में verb के पहले यूज किया हो. A subject pronoun normally replaces the subject or object, that is a noun, of the previous sentence. Like Mike can't attend the party. He has gone to his grandparents. So he कौन है?
पहले पार्ट ऑफ द सेंटेंस के नाउन को रिप्लेस कर रहा है और फिर सेकेंड सेंटेंस में वही प्रोनाउन वर्ब के पहले लिखा जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, मार्टा इज अ गुड स्टोरी टेलर. अब मार्टा की जगह पे हमने सेकेंड सेंटेंस में ये नाउन की जगह पे हमने यूज किया शी, लेकिन ये एक्शन टोल्ड के पहले यूज किया. शी टोल्ड अ गोस्ट स्टोरी दैट स्कैर्ड एवरीवन. तो हमेशा ये हुआ सब्जेक्ट की जगह पे आ गया, उसके बाद होगा एक्शन हैज गॉन, टोल्ड, एटसेट्रा. और उसके आगे के सेंटेंस का जो नाउन है उसको वो रिप्लेस करेगा. बट सेकेंड सेंटेंस में हमेशा प्रोनाउन होगा सब्जेक्ट की जगह पे, इसलिए सब्जेक्ट प्रोनाउन. ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मतलब वो बाद में होगा. ऑब्जेक्ट प्रोनाउन वर्क्स एज द ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस रिप्लेसिंग द एंटीसीडेंट ऑब्जेक्ट. डोंट गो मच इन डिटेल, डोंट वरी. एंटीसीडेंट अगर भूल भी जाते हो तो इट्स ओके, यू कैन डू इट लेटर ऑन. In when you keep on repeating and on and on and on, it will become easy for you. This form of the pronoun is also used after preposition. For example, I will give you a present. Tell her that. I have a gift for your boss. Give it to your boss. तो यहाँ पे it action के बाद, tell action के बाद her, give action के बाद you, right? तो या कई बार वो वर्ब नहीं तो प्रीपोजिशन के बाद भी हो सकता है. लाइक फॉर, यहाँ पे फॉर प्रीपोजिशन है, इन, ऑन, अबाउ, अंडर, फॉर, बिलो, एटसेट्रा. तो यू कैन यूज प्रोनाउन एज ऑब्जेक्ट. यहाँ पे एक्शन के पहले था इसलिए सब्जेक्ट, यहाँ पे एक्शन के बाद है सो इट बिकम्स ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. possessive pronoun, my bag. We have the habit of saying my, right? So I thought my bag was lost, but the one curse Rick found was mine, ours, his, right? तो ये सारे हुए possessive pronoun. It replaces the noun of the possessive adjective. Like my की जगह पे मैं यूज करेंगे mine, my, our, your, her, his, their. अब possessive pronoun क्या बनेंगे इसी के? mine, ours, yours, hers, his का his रहेगा, its, theirs. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे my की जगह कौन ले लेगा? mine. my bag पूरे की जगह ले लेगा mine. their vacation की जगह ले लेगा ours, right? it means our vacation. mine मतलब my bag. रिफ्लेक्सिव तो उसमें आ जाएगा लास्ट में सेल्फ, herself, himself, itself, their self, etc. It redirects a sentence or a clause back to the subject, which is also the direct object of the sentence. A reflexive pronoun comes when the subject performs his action upon itself. खुद पे ही. When you see a reflection in the mirror, you will say, this reflection कौन है? It is myself. तो तुम reflection देख रहे हो, तुम खुद पे you can say the subject is performing its action upon itself. Here itself is a reflexive pronoun. Since she is her own boss, she gave herself a raise. She allowed herself more time to get ready. Computer restarts itself every night. Right? These are called reflexive pronoun. Intensive. Like you are यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंस हम दे रहे हैं किसी चीज को. Intensive pronoun adds importance or emphasis but do not act as the object in a sentence. They can appear right after the subject. ये हमेशा subject के बाद होंगे, right? Not पहले. I will do it myself. I myself. You yourself. We intend to do all the work ourselves, right? Now relative pronoun, like in relation to something when we use the word. So in relation, that is relative pronoun. They are used to make clear what is being talked about in a sentence. They describe something more about the subject or object, like which, right? So relative pronouns are which, whose, that, who, whom, whoever, whomever, whosever. Like the car which was stolen. Yeah, that was stolen. A person who loves. A school which was founded. Yeah, that was founded in 1995 is being renovated. तो ये that, who, whose, whom, which, whoever, whomever, whosever, ये सारे that मतलब which की जगह पे अगर that यूज करते हैं और which
ये सारे हो जाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, मतलब दे आर शोइंग द रिलेशन. Demonstrative, that girl, that boy, this girl, this child, this book, that house. So you are demonstrating, pointing out. So demonstrative pronoun normally indicates the closeness of or a distance from the speaker, either literally or symbolically. This, these, that, those are the demonstrative pronoun. Singular, plural, singular, plural. This, singular. These, plural. That, singular. Those, plural. That is a long way to go. This is my car. Hand me that cricket bat. Right? Interrogative. अब interrogation है. Like who, whose, whom, WH वाले या W वाले, who, whose, whom, which, what, etc. WH वाले send question form. Right? You are asking a question. That's interrogative pronoun. So interrogative pronoun produce questions like what, which, who, whom, whose. Who, whom, and whose refer to the questions. Related to a person or animal. What refers to an idea, object, or event. And which can indicate either a person or a thing, things, or persons. What is the name of a dog? Which is a favorite movie? Who works for you? Whom do you prefer in this competition? There's a new bike on the lawn. Whose is it? Right? अब हम मूव होते हैं टुवर्ड्स दी वर्ब. Again, very interesting. So we move ahead towards a verb. And so up till now we have done noun, pronoun. Noun, third comes verb and types of verb and definition. Or let's see. बहुत सिंपल वर्ड में अगर मैं समझाऊं तो वर्ब इज एक्शन, राइट. अच्छा, दूसरे कई टाइप्स के वर्ब्स हैं, लाइक वी कैन कॉल ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, लाइक इज, वाज, आर, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डिड, डज, डन. फिर विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मी, माइट. तो ये सारे हेल्पिंग एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स हुए. एंड I would say without helping verb or without the action verb, a sentence is said to be incomplete. It doesn't make any sense. Like I told you earlier, she home, he ball is of no use. He studies, he plays. तो action होना चाहिए. अच्छा, सिर्फ helping verb के साथ भी sentence पूरा नहीं होगा. He was, she is, he is playing, she is studying, right? So a verb is a word or a combination of words that indicates action. Indicates means it tells you something about the action or a state of being or condition. मतलब कि तुम किस स्टेट में हो, किस स्टेट में मतलब गुजरात महाराष्ट्र नहीं, क्या कंडीशन में तुम अभी हो, वो ये वर्ब बताएगा. या क्या कंडीशन है तुम्हारी, या तुम कुछ एक्शन कर रहे हो उसके बारे में बताएंगे ये वर्ब वर्ड. A verb is a part of a sentence that tells us what the subject performs. अब सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है वो हमें वो वर्ब बताएगा सेंटेंस में. Verb are the hearts of the English sentences. Jacob in the morning, तुम बोलोगे what is that? What is he doing? Jacob walks in the morning. Simple action. Okay, Mike is going to school is a condition of action. Albert does not like to walk. Action है लेकिन नेगेटिव. Anna is a good girl. अब यहाँ पे कोई कंप्लीट एक्शन नहीं है, लेकिन एक तुम्हारे who are you, what type of person, या just I can say एक helping verb है यहाँ पे is. So let's see. There are 6 basic forms of verbs. They are as follows. These forms are as follows. Children play in the field. तो children play you can easily understand, वो base है जिसके बिना children in the field पता नहीं चलेगा. Children play in the field तो base है. Infinitive, जब हम to play लगाते हैं तो बन जाएगा infinitive. Tell them not to play. अब past tense है played. तो ये सारे basic forms हैं. 6 basic form. One is base word. Base word क्या होगा? Come, go, dance, sing, sit, study, play, etc. Right? तो play base हुआ. अब infinitive आगे to लगा दो तो infinitive verb हुआ. Past tense play का हुआ played. Past participle हुआ eaten, right? Past में like I had eaten. Present participle I have eaten, so it's just that. ये continuous हुआ यहाँ पे, right?
So just cut off this part. This form you can say it is present participle. I have eaten, I had eaten. अब present participle मतलब तुम ये भी लिख सकते हो like present participle मतलब ing when you use. I saw them playing with him today. ing present participle. Okay, instead of cutting this off, let's start this way. बेस पता चल गया, इंफिनिटिव पता चला, पास्ट टेंस पता चल गया, लेकिन पास्ट परफेक्ट होता तो मैं लिखती आई हैड ईटन. यहाँ पे तो पास्ट परफेक्ट की जगह पे हमने डाल दिया वर्ड पार्टिसिपल, क्योंकि हम बेस की बात कर रहे हैं. तो पास्ट पार्टिसिपल होगा ईटन. पास्ट पार्टिसिपल ईटन, गॉन, ड्रॉन, स्वम, संग. तो आई have sung a song. I have drawn a picture. I have driven a car. I have eaten a burger. तो past participle. लेकिन present participle में तुम लगाओगे ing. I saw them eating. I saw them playing, etc. Gerund is simple. Swimming is the best exercise. वही action को when you are just keeping it as main word, it becomes your gerund. Like swimming is the best exercise, eating whole day is not a good habit, etc. अब देखते हैं few of them. Action verb हम देखेंगे, auxiliary verb, modal verb, बहुत सारे हैं. तो हमने देख लिए action verb. अभी आगे part में that it is related to your come, go, dancing, जो समझ में आ जाए. ऑक्सिलरी और मॉडल काफी कुछ सेम ही रहेंगे, तो वी विल कंसिडर एज वन. लाइक विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट. फिर तुम्हारे हेल्पिंग वर्ब्स होंगे इज, वाज, आर, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डिड, डन, डज. इस तरह के वर्ब्स होंगे. लेट्स मूव ऑन टू एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव मींस यू आर डिस्क्राइबिंग अ नाउन, प्रोनाउन, एटसेट्रा in a sentence. It normally indicates quality, size, shape, duration, feeling, content, and more about a noun or a pronoun. और हम उसके आगे लिख सकते हैं टू बी, तो पता चलेगा ये एडजेक्टिव है या नहीं. टू बी काइंड, टू बी क्रूअल, टू बी लॉन्ग, टू बी शॉर्ट, टू बी टॉल, टू बी फैट, टू बी थिन, टू बी काइंड, टू बी सैड, टू बी हैप्पी, टू बी जॉयस. These are all your feelings. To be excited, these are all your feelings. तो ये जब हम किसी नाउन को या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, इट बिकम्स एडजेक्टिव, राइट. और यूजुअली ये कौन से आंसर मिलते हैं इससे? बाय द क्वेश्चन आस्क्ड बाय व्हाट काइंड, हाउ मेनी, व्हिच वन, हाउ मच. The team has a dangerous batsman. What kind of a batsman? Dangerous. You are describing the batsman by using the word to be dangerous. I have 10 candies in my pocket. How many candies? तो ये noun को हम describe कर रहे हैं by 10. I love that red car. Which car? That red car. Right? So again describing the car. I earn more money than he does. How much money? More money. So when you get answer to the question like what kind, how many, how much, which one, or you can say just when you add to be, उस वर्ड के आगे to be लगाओगे तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा. अगर बनता है इस एडजेक्टिव, to be dangerous, to be 10, to be red, to be more. Clear? तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स हैं possessive adjective, interrogative, indefinite, article, compound adjective, demonstrative adjective, quantitative adjective, proper adjective. Let's see a few of them. क्योंकि ये इंडिविजुअली तो एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, बट दिस ऑल दिस वर्ड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, दे फ्रेम द और दे फॉर्म द बेस फॉर योर ग्रामर, फॉर योर फर्दर स्टडीज ऑफ ग्रामर. जब तक बेस तुम्हें पता नहीं होगा, इट विल बिकम डिफिकल्ट. लाइक व्हाट इज नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, राइट. सो डिस्क्रिप्टिव, व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग, like a descriptive adjective is a word that describes nouns and pronoun. Most of the adjectives belong in this type. This adjective, तो ज्यादातर adjective इसी column में fall होते हैं, in this group of descriptive adjectives. These adjectives provide information and attribute to the nouns, pronouns they modify, describe.
Descriptive adjectives also are called qualitative adjective. They are giving you, they are telling you about the quality. Participles are also included in this type of adjective when they modify or describe a noun. For example, I have a fast car. Which car? Fast car. You are describing the car. The hungry cats are crying. Which cats? Hungry cats. तो एक सिंपल which पूछ लो और तुम्हें वो which उस नाउन को पूछोगे which cat, which car जवाब मिल जाता है तो वो वर्ड बन जाएगा एडजेक्टिव, राइट? क्वांटिटेटिव तो हाउ मेनी, आस्क हाउ मेनी चिल्ड्रन. अगेन देखो which पूछोगे नाउन को जवाब मिल जाएगा उसके आगे के वर्ड में तो एडजेक्टिव हुआ. फिर टू बी लगा के भी देख लो एक बार. टू बी फास्ट, टू बी हंग्री, टू बी फ्लाइंग. विच ईगल? फ्लाइंग ईगल. अच्छा हाउ मेनी पूछोगे और या हाउ मच पूछोगे और जवाब मिल रहा है लेकिन वो हमेशा हमेशा एडजेक्टिव नाउन के पहले होगा, बाद में कभी नहीं होगा. लाइक हाउ मेनी चिल्ड्रन? 3 चिल्ड्रन. हाउ मच टास्क? होल टास्क. बन गया एडजेक्टिव क्वांटिटेटिव. प्रॉपर एडजेक्टिव अगेन नाउन के आगे, राइट? मतलब एक पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन की तरह. विच कार? अमेरिकन कार. विच पीपल? चाइनीज पीपल. तो एक प्रॉपर नाउन यहाँ पे लगा हुआ है, राइट? नाउन के आगे जिसको तुम डिस्क्राइब करो उसको तुम प्रॉपर नाउन से डिस्क्राइब करो तो बन जाएगा प्रॉपर एडजेक्टिव्स. विच बर्गर? KFC बर्गर, राइट? नेक्स्ट कम्स डेमोन्स्ट्रेटिव. आई टोल्ड यू जस्ट नाउ दिस, दीज, दैट, दोज. So demonstrative adjective directly refers to something or someone. Demonstrative adjective includes the words this, that, these, those. A demonstrative pronoun works alone and does not precede a noun. अब ये you can say is working on its own. But a demonstrative adjective always comes before the word it modifies. So adjective always 100% कहाँ पे उसकी जगह होगी सेंटेंस में? नाउन के पहले. जैसे से हाउस, तो हाउस के पहले लिखा जाना चाहिए 3 हाउसेस. देन यू कैन से दैट हाउस, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ. दैट बिल्डिंग, दिस कार, राइट? तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले होगा. इट विल प्रीसीड अ नाउन. लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमेशा नाउन को प्रीसीड नहीं करेगा, वो हमेशा अकेला होगा. क्लियर? Now possessive adjective. My car, his cat. You are showing the किसकी possession में है वो. Our job, her books. So possessive adjective indicates possession or ownership. It suggests the belongingness of something to someone or something. Some of the most used possessive adjectives are my, his, her, our. They are your. Right? All this adjective always comes. I told you just now. Any adjective is always before a noun. तो कार, कैट, जॉब, बुक्स नाउन है, उसके आगे हमेशा अलग अलग टाइप के एडजेक्टिव होंगे. फिर वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो, पॉजेसिव हो, राइट? इट कुड बी एनी. अनलाइक पॉजेसिव प्रोनाउन, दिस वर्ड्स डिमांड अ नाउन आफ्टर देम, राइट? इंट्रोगेटिव, ये भी हमेशा नाउन के आगे होंगे. विच, व्हाट, हुज, जिससे क्वेश्चन बनते हैं. क्लियर? लाइक विच फोन डू यू यूज? What game do you want to play? Whose car is this? तो हमेशा ये वर्ड which, what, who, whose, whom, where, ये सारे ज्यादातर एडजेक्टिव वाले जो क्वेश्चंस होंगे which, what, whose, ये हमेशा ये 3 याद रखना, ये नाउन के आगे ही होंगे. उसको हम कहेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स. लेकिन ये कार, गेम, फोन नाउन है, उसके आगे आने चाहिए ये 3 क्वेश्चन वर्ड which, what, whose. Learn it. They are called interrogative adjectives. लेकिन नाउन के आगे, right? Not anywhere else. What is this? तो ये what, अगर मैं पूछूं what is this, तो ये what इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं हुआ क्योंकि what के बाद is है, हेल्पिंग वर्ब है. what के बाद अगर नाउन आ जाए लाइक गेम, तो ये what बनेगा एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. एंड विच इज दिस प्लेस, तो विच के बाद वापस इज आए. हुज के बाद कोई ऐसे वर्ब आ जाए तो फिर विच, व्हाट, हुज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं है. अगर उसके बाद नाउन है विच, फोन, व्हाट, गेम, हुज कार, तो फोन, गेम, कार नाउन है. अगर इन 3 वर्ड के बाद तो ये वर्ड विच, व्हाट, हुज बनेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स. इनडेफिनेट, कोई गिनती नहीं है, 1 2 3 4 कुछ नहीं.
It is some, few, several, each. I gave some toffees to her. I gave some candy to her. I want a few moments alone. Several writers wrote about the recent incidents. Each student will have to submit homework tomorrow. तो ये हुआ indefinite adjective. कोई फिक्स नंबर नहीं है, राइट? आर्टिकल सबको पता है. आर्टिकल ऑल्सो इज अ टाइप ऑफ एडजेक्टिव, क्योंकि वो नाउन के पहले है. तो राइट, आर्टिकल ऑल्सो मॉडिफाई द नाउन. So article also adjective, like a cat is always afraid of water, the cat is afraid of me, and electronic product should always be handled with care. तो noun के आगे आया हुआ word फिर वो article भी हो सकता है, it becomes adjective. And articles determine the specification of noun. Or या a and n are used to refer to an unspecific noun and the is used to prefer a specific noun. A या an, give me a pen, तो तुम कोई भी पेन उठा के मुझे दे दोगे, लेकिन मैं कहूंगी give me the pen, तो वो the रिप्रेजेंट करेगा एक पर्टिकुलर परफेक्ट पेन को जो मैं मांग रही हूं. Clear? It's indicating, it is referring to a specific or fixed noun. Compound adjective. Once again हमने देखा था compound words, compound noun, वैसे compound adjective. अब वापस उसके पीछे क्या होना चाहिए? कंपाउंड नाउन किया, वहां पे भी इसी तरह का था, लेकिन उसके बाद वापस नाउन. नो, यो इट इज ऑफ कोर्स ये इस तरह के कंपाउंड नाउन एडजेक्टिव्स होंगे या वर्ड्स होंगे जिसके बाद नाउन होगा जिसको ये डिस्क्राइब कर रहे हैं. इट शुड बी ऑलवेज अ डिस्क्रिप्टिव वर्ड. I have which sofa? Broken down sofa. I saw which snake? 6-foot long snake. Are you getting it? And degree. He is a good boy. ये डिग्री में आता है. अब गुड के बाद बेटर, बेस्ट, राइट? ही इज बेटर देन एनी अदर बॉय. ही इज द बेस्ट बॉय. तो यहाँ पे तुम उसे कंपेयर कर रहे हो या डिग्री बता रहे हो. दैट इज ऑल्सो एडजेक्टिव. अगेन नाउन के आगे, राइट? द नेक्स्ट इज adverb. Adverb we have already done. Like उसके अलग अलग पास, like what is adverb? It is telling you about the verb or adjective. Action को describe करना, simple. मैंने कहा था पहले भी. Like he is running how? Fast. He is working how? Hard. He is writing how? Unwillingly या willingly. Right? तो adverb clause of time, place, manner, बहुत सारे adverbs हैं जो हम डिटेल में बाद में देखते हैं. लाइक यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, यहाँ पे ही केम कैरिंग हिज बॉक्स विथ 2 hands. यहाँ पे एडवर्ब फ्रेज है, ये क्लॉज नहीं है, राइट? प्रीपोजिशन अगेन वी हैव ऑलरेडी डन इन शॉर्ट अर्लियर. टू, इनटू, अबाउट. प्रीपोजिशन, प्री की पोजीशन बता रहा है. आई टू कनाडा. एलेक्स थ्रू अ स्टोन. कहाँ पे? स्टोन को कहाँ पे डाला? इनटू. प्रेजेंट कहाँ पे? ये प्री कहाँ पे है? इज इनसाइड. दे कहां पे जा रहे हैं? दे की पोजीशन कहां पे? आउट ऑफ द टाउन. सो दे हैव गॉन आउट ऑफ द टाउन. ये सारे प्रीपोजिशन हो गए. कंजंक्शन, फैन बॉयज, आई टोल्ड यू दैट लिंक्स वर्ड्स एंड एटसेट्रा. एलेक्स एंड रॉबिन. एलेक्स प्लेज वेल बट. आई प्ले क्रिकेट एंड रॉबिन प्लेज फुटबॉल. और यहाँ पे बट रॉबिन प्लेज बेटर देन हिम. तो फैन बॉयज, ये हुए कंजंक्शंस. अब इसमें अलग अलग कंजंक्शन होंगे, like coordinating conjunctions, correlative conjunctions, subordinating conjunctions, right? So this is very much in detail we'll be doing in a next video. So till then, revise, revise and revise. Thank you so much. Thank you.